हेलो माय लवली डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माइंडियोलॉजी के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम सभी लोग फेस करते हैं इन अ रेगुलर लाइफ और इन अ नॉर्मल लाइफ, बट ज़्यादा हम कुछ खास इसके लिए करते नहीं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, किसी भी चीज़ को टालना, उसको डिले करते रहना। आज नहीं कल करते हैं, अभी टाइम नहीं मिला, कल नहीं परसों करेंगे, अरे थोड़े दिन बाद में करेंगे, अभी ये हो गया, कुछ भी हम चीज़ें बोलते हैं, वी जस्ट delaying it. That is called the procrastination. So in today's video we are going to talk about some really important, practical and useful tips to stop the procrastination. So if you're interested in this topic and would like to know more about it, then I would request you to please watch this video till end to get the best out of it. So let's start it. Welcome to Mindiology, the platform for skills, lifestyle, and career development. I'm your host and host Deepak from the team Mindiology. So let's start the video. So the first and a very very important thing is, or the tip is, start small. Yes. छोटे छोटे पार्ट्स में अपने बड़े किसी टास्क को आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी भी काम को हम देखते हैं यार तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम है, अभी तो इट कुड बी एनीथिंग, मे बी स्कूल वर्क और योर ऑफिस वर्क और योर कॉलेज वर्क और कोई भी घर में साफ सफाई का काम है, कुछ भी है काम जब बहुत ज़्यादा बड़ा दिखते लगता है, अरे यार नहीं अभी से बाद में करें, इतना टाइम नहीं है, you get that sense of kind of a fear also at times, यार ये तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम होगा, तो it's better that we should break that work into certain equal pieces. Start small. छोटा छोटा धीरे धीरे कीजिए, then you will see कि आपने थोड़ा सा काम अभी किया, थोड़ा सा बाद में किया, तो at least gradually it will have a consistency of completing that thing, and eventually you will be able to do that. You will not just delay that because you have divided that work into parts, into small parts. It's very important that we should pay attention to that. Okay, moving on to the next thing, and that's very very important, that make a plan. Yes, आप जब planning तरीके से काम करते हैं कि हमें इस समय ये करना है, इस समय वो करना है, we have a proper schedule of doing that thing, then you tend to do the things more faster, and then आपके पास एक plan, अब आप उसको delay नहीं करेंगे। काफ़ी बार delay उस situation में होता है when we have no idea, no clue, no deadline that when are we going to complete this task or something. So it's very important that we should make a plan. Okay. Moving on to the next thing, and that's very important, finish things. Yes, कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं then उसको finish कीजिए. Like I mentioned in the first point, that if you think that any work is a very very time long work, or some work is a very delaying the timings process for you, then please divide it into the parts like I mentioned, but finish that. आप चाहे उसको divide करें 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 10 पार्ट में, but उसको finish कीजिए, because once you have that finishing kind of a thing, then you will have a sense of contentment. You will enjoy rest of your time. Make that also thing into your mind that अभी इसको फटाफट finish कर लेते, then we'll have the rest of the time for ourselves to enjoy, to do our stuff, which we also want to do in our spare time. So it's very important that we should finish things. Okay, moving on to the next thing, that's very critical point, that deal with distractions. Yes, काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत सारे distractions है, ये नहीं करे, वो नहीं करे, सोशल मीडिया, दिस दैट, फोन, बहुत कुछ है आजकल के टाइम में, लेकिन हमें उन डिस्ट्रैक्शन से डील करना आना चाहिए कि कैसे हम उसको डील कर सकते हैं. लेट्स से यू हैव एन इम्पोर्टेंट ऑफिस टास्क, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल hypothetically, and you want to finish that, but the kind of environment you're sitting there's a TV is on, there is somebody's playing, maybe your child is playing, or maybe something or the other is going on, then find yourself a quiet place wherein you can concentrate and finish that work and done with it. Right? So distraction कैसे आपको avoid करने हैं, किस level तक वो आपको आपके काम को hamper कर सकते हैं, you must identify those things and deal with them. Just eradicate those distractions, because it's very important about your work, about your productivity. Okay, now moving on to the next thing, which is last but not the least, that be kind to yourself. Yes, अपने लिए भी थोड़ा सा आप
काइंड रहिए कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक डेडलाइंस ले लेते हैं कि नहीं मैं तो अभी इसको 5 दिन में कर देता हूँ जो कि वो 10 दिन में होना है, मैं अभी 1 घंटे में कर देता हूँ। देन व्हाट हैपेंस दैट वो काम होता नहीं है, यू गेट एजिटेटेड, यू गेट इरिटेटेड। वो आपने रियलिस्टिक डेडलाइन नहीं रखी है, आपने काम भी किया, टाइम भी दिया, यू गेट इरिटेटेड, फिर नहीं होता, देन यू लीव इट, अरे नहीं अब नहीं करना, हो ही नहीं रहा है ये तो। That's how it gets delayed. Instead of you can make a realistic timeline or a guideline that okay, this is the timeline I'm giving to this work, and by the end of this week or whatever is the timeline you think it would be completed, then in that case you will be more consistent with the work. Aapka kaam time par finish hoga, you'll feel happy, you'll feel satisfied. So that's it for today my friends. I hope आपको चीज़ें समझ में आई होंगी and you would also use them to handle procrastination in your life. So if you found this video useful and helpful, then do share it with your friends, family and colleagues so that they can also take help from this video. And if you like the content of the videos of Mindiology and you love us, then please do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest update from us always on time my friends. And do share your feedbacks, suggestions and comments into the comment box, or you can write us at infomindiology@gmail.com and let us know what you think and feel about Mindiology, because it's your own channel my friends. So that's it for today. We shall meet next week with yet another interesting and knowledgeable episode for all of you. Till then, please keep loving Mindiology like you always do, and do take a very good care of yourself, my friends. I wish you a wonderful and a blessed day ahead. Bye-bye.